चुपके निकले. Welcome back to Game On Hay. We just had a moment of drama there. We nearly had the man with the hoover and the brush and the mop just cleaning up after us, but we've still got lots to talk about. Now, there was another game today, Scotland in action against New Zealand. Let's just show you the match summary of that game. That was the earlier game today. New Zealand 172 for 5, batting first. Scotland actually quite a good effort trying to chase that down. They had New Zealand struggling a little bit early with the bats. Martin Guptill then played a very fine innings of 93. Ran out of steam a bit at the end. It was mighty hot early in the day. Scotland's 156 for 5 left them 16 runs short in the end. So that was game one today. So yeah, New Zealand with points, which of course they're very grateful for them, and they are still in a very, very good position to stay in qualification for that semi-final. Yes, of course, they were important points. I think Scotland did give a very good fight. So that's why the kind of net run rate we were talking about for New Zealand, to have a more healthy run rate. I'm not sure they will be fully satisfied on that, but the 2 points, they are very, very important, and they've got those 2 points. I mean, just to clarify, New Zealand, having beaten Scotland, have 2 games left. Namibia and Afghanistan, if they win both those games, it doesn't matter at all about net run rate. They'll just have the points they need to go through. Yeah, of course. And that's so we can see now Guptill at the top of the order with all his experience. He used that experience really well. He had set that platform for New Zealand to have a very big win because he scored 93 of 56. नहीं बिल्कुल काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी उससे एक्सपीरियंस प्लेयर उनका और आउट ऑफ फॉर्म था और बड़े लाइक आप कह सकते कि अच्छे टाइम पे उसको वापस आना खुशाइंद है न्यूजीलैंड टीम के लिए कि अगर ये क्वालिफाई करे सेमीफाइनल के लिए और मेरे ख्याल से साथ में क्रेडिट जाता है जिस तरह अर्ली ऑन इन्होंने 3 विकेटें आउट होने के बाद जिस तरह ग्रैंड फिलिप्स ने इसका साथ दिया बड़ा ज़बरदस्त था लंबा पार्टनरशिप उसने की 18 ओवर में वो आउट हो गए 157 पे इनके जो फोर्थ था ग्रैंड फिलिप्स वो आउट हो गया दोनों ने बड़े ज़बरदस्त बैटिंग की और एक टाइम पे लग रहा था कि 190-200 कर लेंगे लेकिन आई थिंक लास्ट में जिस तरह जो 3 ओवर किए स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने क्रेडिट देना होगा सेट बैट्समैन खेल रहे थे क्रीज पे गुप्टिल जैसा प्लेयर और फिलिप्स और उन्होंने लास्ट 3 ओवर में आई थिंक 22 रन दिए तो वहाँ से थोड़ा सा स्कोर उन्होंने रोका और वो जो एंड के 3 ओवर थे वो डिफरेंस थोड़े से पड़ गए और ये है न्यूजीलैंड का बैटिंग कार्ड जिसके बारे में उमर भी बात कर रहे हैं कि गप्टिल ने ऊपर से बहुत अच्छा स्कोर 93 का किया मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा ग्लेन फिलिप्स ने नीचे आके उनको काफ़ी सपोर्ट किया पर एंड जो हमने देखा दूसरी टीम्स में कि फायरवर्क्स आपको एंड पे नजर आते हैं उस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकी तो 190 तक नहीं जा सके बट काफ़ी अच्छा स्कोर था 172 का Yeah, for Scotland and their bowling, actually we'll have a look at him later, but the outstanding figures for me, Mark Watt who's a slow left arm spinner and he's been consistently very, very good throughout both the qualification stage of this tournament and this main Super 12s part. Again, just look at the economy rate, 3.25 against a very good New Zealand side, 4 overs, 12 dot balls, 1 for 13. I think those are great figures by a very, very talented and orthodox slow left arm spinner, which is it's a big plus for them. That. Yeah, especially on a pitch where almost 300 runs have been made. You are bowling with a 3.5 economy, and he's not a big turner of the ball, but he reads the batter really well. And we have seen the most number of stumps are on his bowling because he keeps looking at the feet of the batter, and that's what has been really impressive about him. What we have seen so far. So, अगर हम मार्क वॉट की साथ बॉलिंग भी देख सकें हम अपने उर्दू पैनल से बात भी करते हैं राशिद भाई समझदार बॉलर हैं काफ़ी नहीं बहुत अच्छी बॉल की जो क्वालिफायर राउंड थे वर्ल्ड कप के इसमें भी बैटिंग भी अच्छी करते थे और थोड़ा था ना ये बाहर थे देखिए वाइड ऑफ द क्रीज आके बॉल फेंक रहे हैं और दिन का मैच है इसलिए इफेक्टिव हुआ है डे मैच है इसलिए इफेक्टिव ज़्यादा हुआ है कि थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं रात में थोड़ा स्किट करके बॉल बल्ले पे आती है बहुत ही एक ही जगह पे बॉल करने वाले ये बॉलर हैं और एक्सपेंसिव नहीं रहते कि 13 रन शायद दिए हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है बिल्कुल रूम नहीं दिया ट्रेजेक्टरी भी लो रखी है
देखें और क्रीज को भी पीछे से भी पीछे बॉल से दिए, बॉल बॉल पीछे से कर दिया। अगर आप उनका फ्रंट फुट देखें तो वो पॉपिंग लाइन से बाहर जाके वहां से कर रहे हैं और एंगल को क्रिएट कर रहे हैं, वहां से बॉल अंदर आ रहा है। हार्डली सी एनी स्पिन, मतलब उसमें कोई हमने स्पिन नहीं देखी। तो वो यही है कि स्टम्प टू स्टम्प जो है ना, डॉट बॉल वाली उनकी मेंटालिटी है। इसीलिए आप देखेंगे विकेट के कॉलम में उतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं है उनकी, लेकिन इकॉनमी रेट बहुत अच्छा था। इसमें फास्ट बॉलिंग की बॉलिंग देखते हैं, थोड़ा सा इस पिच के ऊपर बाउंस ज़्यादा था। न्यूजीलैंड के लिए आइडियल था, डे लाइट गेम था ये, और जिसपे गप्टिल जैसे बैट्समैन के लिए, इनके दोनों मैच नाइट में हुए हैं, मुश्किल होती है वहाँ पे, लेकिन डे लाइट में थोड़ा सा बाउंस फास्ट बॉलर का, मीडियम पेसर, तो 1 से 2 प्लेयर काफ़ी इनफ होते हैं 160 प्लस रन करने के लिए। वो किए, गैन फिलिप्स ने भी 33 किए, 93 गप्टिल ने किए, और मार्जिन ऑफ डिफीट कम है, 16 रन इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम को मवाजना करते हैं हम इस टीम से, तो मार्जिन ऑफ डिफीट ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब है कि दूसरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, स्कॉटलैंड ने क्रेडिट देते हैं हम स्कॉटलैंड को कि अच्छा खेलेंगे लोग। एसोसिएट नेशन डे है। मैच है, इसलिए मैं दे रहा हूँ क्रेडिट इनको, डे मैच। सही बात है। नाइट मैच में फिर इनको अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो ये फिर तो न्यूजीलैंड का काफी चांस ज्यादा है डे मैच, क्योंकि अफगानिस्तान से देखिए जो जो आज इनका जो इम्पोर्टेंट मैच मैच है, आज है मैच वो भी डे जो मैच है। है, जो मिस्टेक अफगानिस्तान ने की है ना, अब मिस्टेक नहीं करेगी, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। 7 तारीख को जो मैच होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, न्यूजीलैंड हार भी सकता है उसमें, कोई ऐसी कोई नई अनोखी चीज नहीं होगी। डे मैच के बावजूद जी बड़ी बोल प्रेडिक्शन सकते है, हैं, बहुत बड़ी prediction में क्या प्रेडिक्शन। है? ठीक है। So yeah, Rashid bhai is saying that Guptill, because it was a day match, the bounce was more, it was suiting him because most of the matches they've played in the day, the last 2 matches, and the ball was skidding on, it was keeping a bit low, but because the bounce was much better, so Guptill made the most of it. Well, no, we've seen him over the years. He's a very fine player. When he gets going like this, which we hadn't really seen either in PSL earlier in the year or the first part of this tournament, then it's all brought back happy memories for all of us, mostly him. He's a good player. And what I think was quite important today too, the fact that he would have gotten to 100 if I think the weather or conditions didn't quite get to him. Because as you can see at times, you know, he was suffering, and especially when you're hitting big shots like he did today, and also that you have to quick singles, you double up on your runs at times. It looked like it took its toll, but New Zealand will be quite happy going forward with someone like Guptill at the particular stage that he would have played today. They'll be quite happy. And Scotland, in reply, they made what they call a pretty good fist of it. They got started. If we look at the card, the Scottish card, they got starts from the top 4 or so, 22, 17, 27, 20, and at decent sorts of pace. The best of it was, in the end, it was Michael Leask who top scored not out 42 from just 20. What did he leave? 16 runs short at the end. So actually that's a creditable effort. I mean, look, if you look at New Zealand performance today, they didn't play the best of the best game because, you know, South, Millionaire struggles today, gave away 36 runs for no wicket. And then Sodi, he was their strength. He was bowling really well in this tournament. But today, I've seen banging shot, wasn't consistent, missed out his googlies, and he had a problem with the leggy. Many balls he bowled leggy was banging short and was not on the target. So I think moving forward, so this form is really important for New Zealand if they want to go par semi-final and win this tournament. Let's put it this way, they are on course to be in that semi-final. As we always have to say, anything can happen still, and probably will, but they are on course for that semi-final slot, in which case these are things they will look at. You know, the performances, you know, of the bowling attack under a little bit of pressure there from Scotland. The good thing is that Guptill scored runs. This is a plus for them, and the game against Afghanistan could be very tricky. So they have to play their top cricket against. If we just have a quick look at that bowling card, that Afghanistan. New Zealand bowling card, just to sort of show you the evidence. I mean, Bolt can always be dangerous, 2 for 29 today. Southey, a little bits of ups and downs in the tournament so far, but those are decent figures, 1 for 24. Milne has struggled, although actually he bowled
one really expensive over to start with, followed by maiden, I think. So that's not a bad comeback. So he's struggled overall. Santner, again, the orthodox slow left arm, but with a bit of cunning, with a bit of brain work, seems to work rather well. Number 23 for him, and Sodhi, the man you've just been talking about, who was expensive, the most expensive there today. So they need that unit to fire if for instance, they're going to win a semi-final. Yeah, before they have to beat Afghanistan. Because Okay, quarter-final. Let's call it let's call that final game against Afghanistan a quarter-final. I mean, look, if Afghanistan play their main strength, Mujib in and using the right combination and making a good decisions. Batting first, putting the teams in and try to put pressure on, and they can put pressure on any team. And if Mujib plays, then Hamid and Naveen and Nabi and Rashid, it's a perfect bowling lineup. But hope that Mujib can get fit and fit to play. Okay, on that topic, round robin, just to finish up with, can Afghanistan regain their spirit? Because they lacked their spirit today, the spirit we've admired so much. If they are going to try and challenge someone, i.e. New Zealand at the final game, can they get that spirit back? I believe, personally, they believe they stand a good chance against New Zealand. Maybe that's why they were saving themselves for that match. Next. सर विवियन कह रहे न्यूजीलैंड के साथ बड़ा अच्छा चांस है, इसीलिए आज थोड़ा आराम से खेलें. आप अग्री करते हैं, लेकिन जिस तरह का नेट रन रेट उनका नीचे गिर गया, वो जीतेंगे तो ज़्यादा फायदा तो इंडिया को होगा, उनको खुद अब कम ही फायदा होगा. आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड. नहीं, न्यूजीलैंड को तो ऑब्वियसली वो तो अपने सारे मैच को जीतने के लिए देख रहे हैं. बाकी अफगानिस्तान का ये है कि जो लास्ट मैच है उनके लिए क्वार्टर फाइनल ही है, तो स्टिल मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बैलेंस साइड है. अगर उनकी फील्डिंग भी देखे, फिट है, बॉलिंग कंप्लीट, उनके पास बॉलर्स भी पूरे, बैटिंग भी है. अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं तो नो डाउट कि उनकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है. स्पिनर उनके पास 3 बेहतरीन स्पिनर्स है, पेसर भी उनके अच्छे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं. बैटिंग में वो स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि उनके इतने वो बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें, ऊपर से वो शहजाद हुसैन चले गए, वरना वो उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो आपको लंबा स्कोर हर मैच में करके देखे. स्टिल उनकी जो वीक पॉइंट है वो बैटिंग है. आई थिंक एडवांटेज है न्यूजीलैंड को एडवांटेज है. राशिद भाई, आप क्या समझते हैं? न्यूजीलैंड के पास जो ब्रेन है, कैप्टन है, वो विलियमसन है. मेरा नहीं ख्याल वो करीब भी आने देगा अफगानिस्तान को इस मैच में, क्योंकि कोचिंग स्टाफ जितना बड़ा ले लो उसको बाहर होना है. जिसको डिसाइड करना है, जो मैच को गेम को चलाना है, वो विलियमसन है. उसने प्रूव किया है. टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, फाइनल देखा होगा आपने लॉर्ड्स में, या T20 हो, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ विलियमसन. तो मेरा नहीं ख्याल कि वो करीब भी आने देगा. जबरदस्ती आप आ गए तो अफगानी, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट प्लानिंग करना भी मुश्किल है. बोलना नहीं चाहता. समझ गया ना? ठीक है, ओके. अजू बोलेगा. आपने उनको बोल्ड कर दिया अजहर भाई को. अच्छा मैच होगा. मैं ये समझता हूँ कि अच्छा मैच होगा. अगर तो जैसे डेविड ने कहा कि अगर वो अपनी जो है ना स्पिरिट को बहाल, अपनी अगर स्पिरिट को दोबारा बहाल करेंगे तो हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा. वरना जिस तरह राशिद भाई ने कहा वैसा ही होगा. So these three are going New Zealand's way. Fair enough. Okay. Well, that's in a few days' time. There's a lot of cricket still to come, of course, before we get to that quarter-final as we described it. Sana, what have we got next? What's coming up tomorrow? So for tomorrow's game, the first game is Australia versus Bangladesh, जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी. लोकल टाइम 2 बजे है, पाकिस्तान टाइम 3 बजे आपको देखने को मिलेगी. और जो दूसरा मैच है वो होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है. सर विवियन रिचर्ड बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज का मैच हो. हम भी इंतजार कर रहे हैं. ये शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम से होगा, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 दिन का ब्रेक आ चुका है. वेस्ट इंडीज का कोई मैच नहीं आया. सब टीम्स ने कुछ ना कुछ कमबैक कर दिया है. अब एक वेस्ट इंडीज की टीम रह गई है कि जिसको देखना होगा कि वो कमबैक कर सकती है. I was just about to say, before you interrupted there, I was just about to say that the boys are back in town. Well,
Okay, very well. I'm glad they're back in town. I hope they've brought some cricket kit with them as well. You'll see tomorrow. Okay, fair enough. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much indeed you. yet again. Excellent. We'll be back with you tomorrow morning for those next two games. Still a long way to go yet. For now, though, it's good night and game on, hey. Game on, eh?